चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओबीजी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट 1971 टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी बाय वन डॉक्टर टिल द 12 वीक, 12 वीक तक कर सकते हैं। टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द 2 डॉक्टर 20 वीक यानी 20 वीक तक कर सकते हैं, लेकिन इसको री अमेंडमेंट किया गया। तो ये अकॉर्डिंग टू एमटीपी 2020 की बात कर रहे हैं यानी 2020। इस एक्ट के अकॉर्डिंग टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी बाय वन डॉक्टर टिल द 20 वीक यानी जो पहले 2 डॉक्टर करते थे वो आज उतने वीक तक की आज जो अबॉर्शन है या जो एमटीपी है वो कौन कर लेता है, एक डॉक्टर। टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द 2 डॉक्टर इज 24 वीक तक। साइन ऑफ द प्लेसेंटा सेपरेशन के साइन, lengthening of the umbilical cord, uterus become firm and the globular, the uterus rise in the abdomen और एक gush of blood. Following placental separation, assess the uterus for to exudate and diagnose twin, to determine a baseline fundal height, to detect the sign of placenta separation, to detect the anatonic uterus. The third stage में from the birth of the fetus to which placenta and membrane expulsion occur. थर्ड स्टेज में मतलब birth of the fetus to placental separation, the delivery of placenta, fetus to प्लेसेंटल डिलीवरी। ठीक है। कार्डिनल मूवमेंट अकर बिफोर एक्सपल्जन इज कॉल्ड एक्सटर्नल रोटेशन। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच द सर्विक्स बिकम थिन एंड इनडिस्टिंक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द fetus is called effacement. The second stage beginning from full dilation of the cervix to the expulsion of fetus. During intrauterine life of the fetal development, majority of the testicle descend into the scrotum 28 week. In active phase of the labor, the rate of the dilation of cervix in multigravida is at the ratio of 0. multigravida में 0.5 centimeter per hour. इन मल्टी ग्रेविडा ड्यूरिंग द लेटेंट फेज यानी एक्टिव फेज में हमने यहाँ पे बात किया, तो एक्टिव फेज में लेबर में जो रेट ऑफ डायलेशन ऑफ द सर्विक्स होता है 0.5 सेंटीमीटर पर आवर, और मल्टी ग्रेविडी में ड्यूरिंग द लेटेंट फेज एवरेज रेट ऑफ द सर्वाइकल डायलेशन इज 0.35 सेंटीमीटर पर आवर एंड द एक्टिव फेज में 0.5 सेंटीमीटर पर आवर। प्राइमरी ग्रेविडा सर्वाइकल डायलेशन in the active phase is 1 centimeter per hour. Which of the following term is used to describe the thinning and the shortening of cervix that occurs just before the during the labor is called effacement. Painless bleeding after the 28 week of pregnancy is associated with placenta previa. Painless bleeding in clinical feature of the placenta previa and the painful active bleeding is clinical feature of the abruptio placenta. When the upper segment contract, the lower segment relax is known as polarity of the uterus. Which hormone is responsible for the performing placental function first 8 to 10 week of the pregnancy is called HCG hormone. क्रोनिक हार्मोन की बात कर लेते हैं। कोरियोनिक हार्मोन, नॉट क्रोनिक। द एचसीजी हार्मोन इज मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी। वैसे तो प्रोजेस्टेरोन को बोला जाता है मेंटेनिंग ऑफ द प्रेगनेंसी हार्मोन। एचसीजी हार्मोन इज मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी और परफॉर्मिंग द प्लेसेंटल फंक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months ऑफ द लाइफ टिल प्लेसेंटल मैच्योरेशन। जब तक कि प्लेसेंटा मैच्योर नहीं होता, एचसीजी हार्मोन मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को एंड परफॉर्म करता है प्लेसेंटल फंक्शन।
ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 month ऑफ, या फिर टिल प्लेसेंटल मैच्यूरेशन। व्हेन द fetus die and the retain in the uterus is called misabortion. An abortion that cannot be halted or there is no chance of continued pregnancy is called inevitable, अवश्य ही होगा। Implantation of the fertilization ovum outside the uterine cavity is called ectopic pregnancy. Implantation of the fertilization ovum outside the uterus यानी मेनली फैलोपियन ट्यूब 90 to 95%। एक्टोपिक प्रेगनेंसी आकर इन फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम ट्यूबल प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, इन विच 78% of the pregnancy occur in ampullary part of fallopian tube is called 12% of isthmus part। यानी यहाँ पे परसेंटेज दी गई है कि इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द यूट्रस यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब में 90 to 95% होता है, और जिसको हम ट्यूबल प्रेगनेंसी कहते हैं, और एम्पुला पार्ट में 78% होता है, और 12% होता है तुम्हारा स्टमस पार्ट में। प्राइमरी पीपीएच की बात करते हैं तो आल्सो कोल्ड एज अर्ली पीपीएच। पीपीएच मीन्स postpartum hemorrhage, means blood of the loss during the first 24 hours of the delivery। PPH यानी प्राइमरी पीपीएच यानी फर्स्ट प्राइमरी पीपीएच मोस्ट कॉमन कोज एटोनिक यूट्रस, क्या बोलते हैं इसको, एटोनिक यूट्रस या लॉस ऑफ द यूट्राइन कोज बाय द ओवर द डिस्टेंशन। सेकेंडरी पीपीएच यानी लेट पीपीएच आकर आफ्टर द 24 of the hour of the pregnancy। Secondary PPH main caused by the retained placenta fragment। The Mullerian duct, the Mullerian duct, the Mullerian duct in the female amniotes develop into the fallopian tube। pH of pH of vagina become acidic due to क्या है, pH of vagina become acidic due to Doddelini bacillus। Dodeline bacillus। Neural tube defect can be prevented by the maternal folettes। Supplementation, neural tube defect can be prevented by the maternal folate supplementation। A nurse is aware that the best place to detect the fetal heart sound in the first trimester of the pregnancy above the symphysis pubis।
When which antibody cross the placenta is called IgG. A vaccine-shaped cavity that forms a ring between the movable vertebra of vertebral column and lower limbs is called pelvic girdle. क्या बोलते हैं इसको? Pelvic girdle. A hormone that prevent the menstruation. A hormone that prevent the menstruation and maintain the pregnancy while sustaining the function of corpus luteum is called human chorionic gonadotropin hormone, HCG hormone. A hormone that prevent the menstruation and maintain the pregnancy by the function of the corpus luteum is called HCG hormone या human chorionic gonadotropin hormone. In the fetal skull, in bregma is found at the junction of sagittal coronal frontal suture. Abnormal proliferation of the uterine endometrium tissue outside the uterus is called endometriosis. Is called endometriosis. Contraception and the pills help in the birth control by the preventing ovulation. Commonest complication of the IUD insertion is pain, vaginal pain या फिर pain. At the 8th week of the gestation, the uterus look like size of the grapefruit. Inability to conceive after the consist attempt for a 1 year period without any kind of the concentration is known as infertility. Primarily of infertility, couple has never had a child. Secondary infertility, couple has conceived but women are unable to sustain pregnancy to conceive due to the infection. Most common cause of the secondary infertility is polycystic ovarian syndrome या PCOS. Sterility. Sterility is unable to produce offspring, sperm and ovum. Oxytocin hormone is the work on the breast is myoepithelial cells. And on the uterus, contraction of the uterine muscles and let down reflex is called milk ejection. Prolactin hormone is work and the lactogenesis or forming milk forming hormone, so also known as galactopoietic hormone. Hormone is responsible for the ovulation and the development of the corpus luteum is called LH hormone.
Narrowest part of the fallopian tube is the interstitial. Is the interstitial portion. Intramural and the interstitial 1.25 centimeter. 1.25 centimeter long and the 1 mm diameter. Narrowest part of the oviduct. Isthmus is almost straight, measure about 3 to 4 centimeter length and mm is 2 mm diameter. Ampulla is the widest part of the oviduct, 5 centimeter length, and usually fertilize occur here. Infundibulum is a 1.25 centimeter funnel shaped opening near the ovary, attached to the ovary by fimbriae. Which of the following is a heart-shaped pelvis? Is called android pelvis. Sudden gush of the blood lengthening of the umbilical cord after the delivery of the baby is indicate placental separation. Discoloration of anterior vaginal wall due to vascular congestion is called Chadwick sign. Disease that passes from parent to offspring across the placenta is to be transmitted by vertically. In female, first puberty sign is thalarchy. Most common cause of the vaginitis is called Gardnerella vaginalis. नॉट सेट 2021 में आया है. ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक्टेशनल मेस्टाइटिस इज कॉल्ड स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. विच रूल यूज टू कैलकुलेट द gestational age of pregnant lady is called Naegeli's rule. Episiotomy is the best done and the commonly practiced in mediolateral. मोस्ट कॉमन कौन सी है? मीडियोलेटरल. latent phase of the first stage of the labor, cervical dilation 1 to 3 centimeter. Latent phase of the first stage of the labor, cervical dilation 1 to 3 centimeter, walking and ambulation, position changing for comfort and the slow pace breathing for relaxation. Active phase of the first stage of the labor, cervical dilation is 4 to 7 centimeter. We calm and the quickly use modified slow breathing pattern, back or sacral pressure, position change and analgesic for comfort. Transition phase of the first stage of labor, cervical dilation is 8 to 10 centimeter. Complete bed rest pattern, pace breathing for comfort, pain reducing measures. The smallest diameter of the true pelvis is called interspinous diameter. इसको क्या कहते हैं? ट्रू pelvis का diameter is called interspinous diameter. डंपा इज अ कॉन्ट्रासेप्शन प्रोटेक्शन अप टू 3 months. ये इस बार भी आया. डंपा इज सप्लाइंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट. अंडर द ब्रांड नाम इज अंतारा. द मोस्ट इंजेक्टेबल contraception called Antara consists of the depot medroxyprogesterone acetate. It is given 150 mg per ml 2 to 3 months.
सहेली और द ओमो और मैक्स और सहेली और मेलोक्सिफाइन is also known as the centrochromone, one of the selective estrogen receptor modulator. Saheli contraception developed by the Central Drug Research Institute, लखनऊ. ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है. CDRI लखनऊ. The commonest site of the ectopic pregnancy was ampulla 64.44%, followed by the 24.44% isthmus and 8.89% fimbre. According to WHO, dose of the LNG levonorgestrone acetate is 1.5 mg. स्ट्रॉलवर्टी साइन सीन इन विच कंडीशन इज प्लेसेंटा प्रीविया का कौन सा सेकंड पोस्टेरियर. ए साइन ऑफ द प्रेगनेंसी कंसिस्ट ऑफ डार्क ब्लूइश और पर्पलिश रेड कलर ऑफ द वेजाइनल और सर्वाइकल म्यूकस एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द एरिया इज नोन एज चैडविक साइन. द प्रेगनेंसी कंसिस्टिंग ऑफ डार्क ब्लूइश और पर्पलिश रेड कलर वेजाइना, इसको कहते हैं चैडविक साइन या फिर जैक मियर साइन. डोज ऑफ IFA फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी इन एनीमिया मुक्त भारत कंपेन इज कॉल्ड 60 mg आयरन और 500 mg फोलिक एसिड. ये इस बार भी आया. Assuming the menstrual cycle length as 32 days and LMP as a 10 June, यानी 28 का नॉर्मल डेज होता है. 28 यानी 32 माइनस 28 तो कितना हुआ, 4 दिन एक्स्ट्रा हो गया. तो पहले तो 10 + 4 14 दिन मान के चलो तुम्हारा LMP हो गया. LMP क्या हुआ, 14 जनवरी प्लस 7 दिन जोड़ दो, 7 4 11 यानी 21 जनवरी. उसके बाद तुम जोड़ो अब जनवरी फरवरी जनवरी को छोड़ दो, उसके बाद जोड़ो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर. अगर जनवरी था तो 21 अक्टूबर आती, लेकिन हमें क्वेश्चन में पढ़ने में गलतियाँ हुआ, तो गलतियाँ ना करना है. तो 10 जून है, तो 10 जून मतलब 14 जून LMP हुआ प्लस 7 डेज जोड़ा 21 डेज हुआ. तो जून के बाद आता है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च. तो आंसर क्या जाएगा, 21 मार्च. Which IUD need to be replaced after 10 year, तो कौन सी होती है, फ्रीडम 10 CUT 380 AG. Oxygenated blood enter the fetal circulation from umbilical vein via ductus venosus. Umbilical vein via ductus venosus. The nurse explained to the mother of neonate diagnosed with erythroblastosis fetalis that the exchange of transfusion is necessary to prevent damage to brain. Maternity nurse must be aware that the screening for diabetes mellitus pregnancy is done 24 to 28 week of the pregnancy. Postpartum insertion of the intrauterine device should be initiated within how many hours after the delivery of baby? Within 48 hours. नंबर इसमें हुआ. व्हाट इज द नॉर्मल अमाउंट ऑफ द amniotic fluid at the 36
week of the pregnancy is called 1000 ml. What is the normal amount of the amniotic fluid at the 40 week of the pregnancy is term week यानी 600 to 800. नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है 5 to 25 AFI या सेंटीमीटर सॉरी. Patient is having the severe pain in perineum area and feel the pressure in rectum after the delivery due to vaginal hematoma. The dose of the elemental iron and the folic acid in Anemia Mukt Bharat program for the pregnant woman is 60 mg elemental iron and 500 mcg is folic acid. AMB program 2018 daily IFA tablet starting from the 4th month of the pregnancy to continue throughout the pregnancy, minimum 180 days or 180 days to postpartum, total 360 days. यानी अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम 2018 के अकॉर्डिंग डेली 1 IFA tablet starting from 4th month of the pregnancy to continue throughout the pregnancy, minimum 180 days and the 180 days in postpartum, total 360 days. AMB program 2018 each tablet containing 60 mg iron, elemental iron, 500 mcg folic acid, sugar coated, which is coded by red color. Ravson grade 5 of LSCS criteria included multiparous woman singleton cephalic pregnancy 37 weeks से ज़्यादा within previous LSCS. Ravson grade 5 of LSCS criteria include multiparous woman singleton cephalic pregnancy greater than 37 weeks of with previous LSCS. The volume of the blood in mature placenta is about 500 ml. Regular rhythmic uterine contraction elicited during the bimanual examination is as early 4 to 8 weeks is called Palmer sign. Dark brown color of amniotic fluid is included in intrauterine death IUD. During post maturity, color of amniotic fluid is called greenish yellow color. Normal condition, the color of the amniotic fluid at least at the term is pale straw color. Normal color condition of the color amniotic fluid at the term is pale straw color. The sebaceous gland which remain non-dominant in non-pregnant state become hypertrophic pregnancy. This gland is called Montgomery tubercle. Intestinal implantation of the fertilization ovum is completed on 11th day. The alteration in the shape of the fetal head which coming through the resistance birth passage during labor is termed as molding. The structure that establishes connection between the mother and the fetus during intrauterine life is called placenta. The postpartum period extends for how many weeks after the pregnancy is called 6 weeks. In which type of the abortion the cervical os remain closed and there is no passage of the tissue is called threatened abortion. Is called threatened abortion. अभी की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं. चलो 331 तक करते हैं.
What is the total iron requirement during an average pregnancy is called 1000 mg. थैंक यू सो मच, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ऐसी ही अच्छी और शानदार वीडियोस पाने के लिए नर्सिंग वाला 786 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।